Thank you very much, dear students, again for joining me. The third phase of our lecture, जो कि आज हम करने जा रहे हैं, these were actually with the help of these tools, we were playing around these tools. Okay, so what we will do today is that we will start our most difficult जो कि task है, या जिसके मुतालिक अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आपको फोटोशॉप में ये वाला टूल जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, पेन टूल, अगर पेन टूल आपको ऑपरेट करना आ गया, मींस दैट यू आर द एक्सपर्ट नाउ इन द फोटोशॉप. सो मैं बार बार आपको इंसिस्ट करूंगा कि नॉट ओनली इस सेशन को, बल्कि इसके साथ कंटिन्यूएशन में अगले सेशन को, जो कि इसके बैक टू बैक हमारा कंटिन्यू रहेगा. इस सेशन को ज़रूर बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, इससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. और कोई भी चीज़ अगर कंफ्यूजन या कोई चीज़ स्टिल पेंडिंग, इफ़ यू फाइंड आउट इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट, यू कैन जस्ट गो टू द यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल से जाके आप इस एक्सरसाइज को या इस लेक्चर को दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं. एंड देन यू कैन गेट बैक टू मी. एंड दिस इज समथिंग, Noman, please. Noman, I just do not want to see you. Thank you. Okay, so the pen tool starts with this kind of pen icon. Okay, so let's create first a new document, file, new, and create whatever. जितने भी size का आप एक document create करना चाहते हैं, just come up with this option. And let's start with the first, the pen tool. पेन टूल क्लिक करने से क्या होगा? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, जो कि ऊपर टॉप पे है. ओके, सो पेन टूल बेसिकली क्या करता है? पेन टूल बेसिकली आपके लिए डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ करता है, और उन पॉइंट्स के अंदर irregular, regular, whatever the type of shape you want to create, with the help of pen tools आप very easily create कर सकते हैं. Okay, you clicked on this, you click on this on the screen somewhere, and you just click on this and this and this and this. That means a shape you have created. लेकिन what is the difference between a lasso tool and this one? Lasso tool भी तकरीबन यही करता है. Let's click on this, click here, and click here, and click here, and here we go. Almost वही काम करता है. But no, there is a huge difference. If I ask you कि यहाँ से ये कॉर्नर ठीक नहीं हुआ, you have to come up with this option कि इसको दोबारा से क्लिक करना है, तो you must have to go from the scratch again. फिर दोबारा से शुरू करना पड़ जाएगा. So this is one thing you must have to remember, but not in the pen tool. ठीक है ना? ये मैंने lasso tool की मदद से दोबारा क्रिएट किया. मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इस कॉर्नर को थोड़ा सा यूं करना चाहूँ, तो I might not be able to do it. ठीक है? So, but when it comes to the pen tool, yes, you can, and very easily you can. Okay, let's click on this. You can move this to this. Okay, you can move this to somewhere here and pick this one. एक बार click करें, select हो गया, and you can move to this. And then of course, if you click on this, first is आप automatically ये करें, second इस वाले को click करें. क्लिक करने के बाद you can bring it to any desired location जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं. So this is a kind of arrow which is marking, yeah, showing the upward side. So that is something which you can very easily create. लेकिन there is another very interesting tool. Let me delete these whole things first. सारे कंट्रोल की से मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा सेलेक्ट किया and delete one. Okay, first you have to move to the layers panel. You know, in the layers panel we create different sort of layers. बिल्कुल ऐसे ही पेन टूल जब आप क्रिएट करते हैं, तो you create actually the paths, different sort of paths you create. As soon as you select the pen tool, आप इस पे यहाँ से क्लिक करते हैं. Here, have a look at this. A new work path has been created. Okay, तो आप जो भी चीज़ यहाँ से किसी भी शेप की irregular, regular, whatever the shape आप क्रिएट करना चाहते हैं, that is the work path which will be saved by default. One, only one work path will be saved. But for example, I'm interested कि मैं इसी तरह का एक path और बनाऊं इसके parallel somewhere here. Okay, अगर मैं वो बनाना चाहूँ, तो yes, with the help of pen tool I can. But the problem would be कि अगर मैं वो चीज़ create करना शुरू कर दूंगा something like this, तो automatically layer नई नहीं बनेगी. Layer will remain the same. Okay, and automatically you have all those options जो कि layers के लिए होती हैं, वो सारी की सारी options आपके लिए यहाँ
पेन टूल के साथ भी अवेलेबल है. यू कैन क्रिएट अ न्यू लेयर. ओके, यू कैन डिलीट अ लेयर. दिस इज वर्क पाथ. वर्क पाथ की लेयर को आप नई क्रिएट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं. लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि इस पे बनी हुई कोई भी शेप आप जस्ट एक दफा कंट्रोल की से इसके ऊपर क्लिक करें, इट विल बी एक्टिवेटेड. इसके सारे पॉइंट्स विल बी एक्टिवेटेड. यहाँ पे इसके पॉइंट्स एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज आपकी सिलेक्शन ये है. कंट्रोल की मैंने प्रेस की, विद द हेल्प ऑफ जस्ट माउस के एक क्लिक इसके ऊपर करने से that point will be active and इसके सारे के सारे points activate हो जाएंगे. Now क्या कर सकते हैं आप इससे? आप लेट्स सपोज विद द हेल्प ऑफ अगेन कंट्रोल की इसके ऊपर क्लिक किया एंड उठा के इसको यहाँ पे ले आए, और इसके ऊपर क्लिक किया और उठा के इसको यहाँ पे ले आए. सो दैट इज समथिंग वेरी मच ओपन टू योर चॉइस कि आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं. फर्स्ट थिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिलीट समथिंग, यू कैन very easily go and with the help of alt key you can just sorry, without alt key you can delete this one with the help of just ये minus key और इसके ऊपर आए and there's a minus key. okay, जैसे ही आप कॉर्नर के ऊपर आएंगे ऑटोमेटिकली इसका पॉइंट तो बना हुआ है. So that means you are somewhere either interested to delete it or you are trying to move it. If you are trying to move it, press the control key. Here it is the control key. Now you can select and move it. Okay, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड या इफ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, सो जस्ट इसके पास ऑटोमेटिकली इस कॉर्नर के ऊपर आएंगे. बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप एंड पेन टूल वुड अंडरस्टैंड दैट यू आर इंटरेस्टेड टू डिलीट इट. So let's click on this and here we go. Correct. Now let's move to another next level, next step, and that is कि इसकी मदद से आप कोई irregular shape क्रिएट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ आल्ट की आप ये चीज भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ कंट्रोल आई एम गोइंग टूवर्ड्स द आल्ट की. ओके, आल्ट की ये इसको डिवाइड कर देगी इनटू डिफरेंट एंगल्स. मींस यहाँ से ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल. okay, so this is something very very important. with the help of this tool मैं आपको बार बार इंटीमेट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फोटोशॉप का पेन टूल बड़े क्लियरली और अच्छे तरीके से सीख लिया, आपको मोर देन 50% ऑफ द फोटोशॉप जस्ट इस एक टूल की हेल्प या इस एक टूल के आने पे यू कैन, आई कैन गारंटी यू कि आपको 50% फोटोशॉप आ चुकी है. ओके, इट इज सो इम्पोर्टेंट. अब हम जाते हैं इस टूल के ऊपर. मैं इसको सिलेक्ट करने के लिए आई प्रेस दी कंट्रोल की. कंट्रोल की को प्रेस करने से ये कॉर्नर सिलेक्ट हो गया. नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द कंट्रोल, कंट्रोल तो अब रह गया मूव करने के लिए. अगर आपने इसको मूव करना है समवेयर हियर 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 किसी भी लोकेशन के ऊपर, ठीक है. बट अगर मैं आल्ट की प्रेस करके इसको चेंज करता हूं तो व्हाट इज दिस शेप नाउ? चॉइस इज योर्स. आप जो चीज क्रिएट करना चाहते हैं अब आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो लेट मी डू दिस अगेन. लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेशन को करूँगा पास, सो दैट कि जो बेसिक्स इसके टूल हैं ये आपको हो गए क्लियर. हाउ कैन यू माइनस, हाउ कैन यू ऐड, सॉरी ऐड वन रह गया एंड दैट इज हाउ टू ऐड. एब्सोल्युटली अजरा, एग्जैक्टली राइट. देखिए कितना इजीली आप, कितनी खूबसूरत शेप्स. इट्स अ काइंड ऑफ एटल शेप बाय द वे, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फूल की पत्ते. ओके, इट वुड बी अ काइंड ऑफ. अब आप आर्ट की अगर सेंटर में रखेंगे सो दैट मीन्स कि ये एंगल दोबारा से रीसेट जीरो हो जाएगा. एंड ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इस शेप को किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं, मींस यूं या समथिंग लाइक दिस, तो आप इस पे दोबारा क्लिक कर दें. ओके, मींस अगर मैं आल्ट की प्रेस इंस्टेड ऑफ सेंटर मैं कॉर्नर पे प्रेस करता हूं सो दैट के दिस जो ये वाला एंगल है दैट विल रिमेन द सेम, ये वाला ब्रेक हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ से आगे वाला ये जो शेप बन रही है, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू रीशेप इट,
अगेन विद द हेल्प ऑफ आल्ट की मैं इसको ये देखिए क्या से क्या बनाने लगा। ओके, सो इफ आई एम इंटरेस्टेड कि नो मैं यहां से इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली आप लाइन पे किसी जगह आएंगे, so the Photoshop and the pen tool would automatically understand that means you are interested to add something on the blank line. So just click here, and here it is, another point that has been added into the shape. So again with the help of alt key you can, आप ऑटोमेटिकली इस पे क्लिक करें, alt की से आप इसको नई शेप देना शुरू करो, या इसको थोड़ा सा आप इस शेप में ले आएं। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, नाउ द स्काइज आर द लिमिट्स। अब इसके बाद आपके लिए किसी किस्म की कोई शेप मुश्किल नहीं। ओके, सो दैट मीन्स प्लस माइनस एंगल चेंजिंग एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ बेसिक जितनी चीजें हमने डिस्कस की वो सारी की सारी इस आपके एक सेशन में हम वो सारी की सारी कवर कर लेंगे। लेकिन द नेक्स्ट सेशन जो इसके बाद अभी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इसी की फर्दर एक्सटेंशंस भी थोड़ी सी देखेंगे। करेक्ट, सो लेट मी stop the recording as well as the session here, and I would request every participants of my class to restart this session. I mean मैं उसको लॉग इन करूंगा और आपने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है so that कि हम यहीं से अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकें। सो